Hello and good morning to all. Welcome to DSS online class. Now, next point is let's see the features and roles of operating system. Important features of an operating system are: number 1, protected and supervisor mode. That is, operating system or supervisor mode supervises the all applications, whether the application is working properly or not. If some errors are in application, some errors occurred in the application, it will automatically show to the user to take the appropriate action. The second is allow disk access and file system, device driver, networking security. That means it's allow to access file over the disk or to access file in applications. So for that also operating system is possible. Now next feature is it's allow program executions. That means we can execute any compatible program in the operating system. Next is memory management, virtual memory, multitasking. That is, we shows all the memories, how much free memory is available, how much memory is occupied in the application or if an application. Okay beta, as well as it is the virtual memory for performing a multiple task at a time. Next operation, the important handling IO operations. IO means बेटा क्या होता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन. जो हम इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं, इसको हैंडल कौन करता है? हैंडलिंग कराने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. हम कोई भी इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट देते हैं, माउस से भी इनपुट देते हैं, जॉयस्टिक से भी इनपुट देते हैं, जो आपने पहले पढ़ा होगा. तो हैंडलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, इनपुट जब तक हम नहीं देंगे तब तक हमारे कंप्यूटर से हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा. ओके, तो इसको हैंडल करने का काम कौन करता है? हैंडलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब आईओ को, ऑपरेशन को हैंडल कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम. दैट मीन्स इफ एनी फाइल I am already created and I want to change anything in that file. हम कुछ भी चेंज करना चाहते हो अपने फाइल में. It allows me to open the file and make that changes, and it allow me to save after changes, save this file. Okay, उसके बाद वो अलाउ कर दे क्या हम कोई भी जो चेंजेस किए हैं फाइल में वो क्या करें, फिर से हम सेव कर सकें इन प्रॉपर प्लेस. किसी भी प्रॉपर प्लेस पे हम क्या कर सकें, उस फाइल को हम सेव कर सकें. नाउ नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग. एरर डिटेक्शन मीन्स एरर कैन बी ऑफ एनी टाइप. इट मे बी सिंटैक्स एरर and maybe technical error or any type of error. Okay, some error that occur in the computer. कोई भी error पकड़ा गया है कंप्यूटर में. It allow to detect the errors. ये अलाउ करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस एरर को डिटेक्ट करने के लिए. ओके, एंड आल्सो सजेस्ट द प्रॉपर एक्शन टू बी टेकन सो दैट एरर कैन बी रिमूव्ड. नाउ नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशंस. Resource allocation means resource allocation all the hardware and software as well as in the memory. It means it allocate the required amount memory to the disk applications, because the different applications required the different amount of the memory where store the data. So according to the required of application and hardware, operating system allocates the memory for proper functioning. And next is information and resource protection. That is the important role of the operating system. Operating system provides security features like authorization and authentication. Authorization means operating system allow to enter
is or her username, and authentication means where the operating system asks the user to enter both the username as well as the password. So understand authorization and authentication means. Now let's understand what is a kernel. Kernel क्या होता है? The kernel is the center component of a computer operating system. The only job performed by the kernel is to manage the communication between the software and the hardware. We can see the figure here. Here is the user, then application or programs, then operating system kernel, then hardware CPU, memory, device. हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका कर्नल होता ही है, ये जान लीजिएगा. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें कर्नल होता है. ये नहीं कि ये आपका उस टाइप का कर्नल है, क्या बोलते हैं, मेजर टाइप का, जैसे फोर्सेस में होता है कर्नल, वो कर्नल ये नहीं है. ये कंप्यूटर का कर्नल है, ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का कर्नल नहीं है. Here is the application program. Then application program open the operating system, then help to the kernel, then go for the hardware CPU. ओके, हार्डवेयर के पास जा देता है. ठीक है, तो किसकी हेल्प लेता है ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके कर्नल की हेल्प लेता ही है, ध्यान दीजिएगा. कर्नल इंटरेक्ट करता है CPU, मेमोरी, डिवाइस को, जो हार्डवेयर है उसको, सॉफ्टवेयर को भी कर्नल इंटरेक्ट करता है. ठीक है. A kernel is at the nucleus of a computer. It makes the communication between the hardware and software possible. While the kernel is the innermost part of an operating system, a shell is the outermost one. We can see here is the hardware and that is the software. And between this there is the operating system. An already operating system containing the kernel. It makes the communications between hardware and then software possible. We can see the second figure also. This is the hardware and here terminal is the software, and between this there is the operating system, this containing a kernel. So while the kernel is the, we can see there is the kernel, one side there is kernel and other side is the shell. This kernel makes the communication between the operating system and the hardware, where this shell relies the operating system and the applications. Terminal is also software. Okay, so the other word we can say kernel is the innermost part of the operating system, whereas shell is the outermost part of the operating system. Let's see the features of the kernel. But first features is low level scheduling of processing. Low level scheduling means it process the works in inner loop, low level language that will easy to understand by the user. It performs the inter-process communications. Inter-process communication means we do not see the process between hardware, between operating system. That is called the inter-process communications. Okay, it process synchronizations. Synchronization means the changes in one place and that is reflected on another place. एक place पे change हो रहा है तो reflect करेगा दूसरे place पे भी. Okay, that is called synchronization. So it perform the synchronizations. Next is context switching. It switches the contacts one by one. For example, I will take an example of switching. If the computer have two users, sometimes we change the user. Suppose that आपके कंप्यूटर में दो यूजर्स बना हुआ है, स्टूडेंट का और एक टीचर्स का. तो आप देखते होंगे हम क्या करते हैं, स्विच कर लेते हैं. एक यूज़र पे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर वो यूज़र उस पर अगर ठीक से वर्क नहीं हो रहा है, एडमिन नहीं है और हम कोई फाइल कॉपी नहीं कर रहे, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से परमिशन लेते हैं या उस यूज़र में हम क्या करते हैं, स्विच कर जाते हैं.
that is called context of switching. Okay beta, now next topic is next term. Thank you, have a nice day.